what we use in Chartwork. We have seen the different methods by which bearings can be given to us through gyro bearing or magnetic compass bearing or relative bearing. We saw what is variation, and we also saw how is variation obtained. We saw a small video, a 5 minutes video. How can variation be picked up from the compass rose if required? Most of the time variation is given to us in the question paper, so we can simply pick up that value and use for our questions. But we also know how practically the variation can be picked up from the chart, from the compass rose. So this is what we did up to the last session. Now we are going to move into deviation. So let's continue. Let's start. Now the second component of the compass error is the deviation. Let's understand what the deviation is and how can we obtain the value of deviation. Now, if we were sailing on a wooden ship, our magnetic compass would point towards the magnetic North Pole, or it will point towards the magnetic meridian. But the ships which we are sailing on are made up of steel. They are not made up of wood. Now, steel is a magnetic material. It can have magnetic properties and it has magnetism of its own. Now, this ship's magnetism disturbs our compass, which is known as deviation. So ship's magnetism deviates the compass from the magnetic meridian, and this is called as deviation. You can see this diagram here on the right side of the screen. We have a boat here, a wooden boat, in which a metallic engine is fitted. Now this metallic engine has magnetism of its own. It is made up of mild steel, which has magnetic properties. So this magnet which you see, red and white color magnet, this represents the magnet of a compass. Because of the magnetism of the engine, our compass is deviated or disturbed from the magnetic north direction, and this disturbance is known as deviation. Another important thing which you can see in this diagram is, depending upon the heading of the ship, the location of the engine will change with respect to the compass needle. So the deviation also keeps on changing as the ship's head changes. The angle between the magnetic meridian and the compass needle is called deviation. The deviation varies in name as well as magnitude as the ship's head changes. Deviation could be easterly or westerly, depending upon what is the heading of the ship. Beta, any doubt up to here? No, sir. Okay, very good. Let's go ahead. The deviation is obtained from a deviation card. Deviation card is available to us on board a ship, and a deviation card is also provided to us during the exam. Let me show you a sample deviation card.
You can see this deviation card on the screen. This is how it is provided in the exams. Now this particular card has actually 4 deviation cards in it. You can see card number 1, card number 2, card number 3 and card number 4. When you go through the notes in the question paper, the notes will tell you which particular deviation card is to be used for solving the questions. Say for example, a particular paper tells you, please use deviation card number 2. Then you can see we have highlighted the deviation card number 2. Then this is the card which is to be used for solving the questions. Now in the deviation card, you can see that the card is entered from ship's head by compass. We have to know what is the ship's head by compass. Using the value of ship's head, we can enter into the deviation card and pick up the value of deviation. The heading value ship's head by compass is usually given for courses for headings which are 10 degrees apart. You can see the value given for true north 0, 0, 0. After that, we have the value of deviation given for 0, 1, 0, 0, 2, 0, 0, 3, 0, and so on up to 3, 6, 0, which again is 0, 0, 0. Now to find any deviation value for intermediate headings, if you want to find the deviation value for any intermediate headings, we need to interpolate the values from this card. Let me explain this to you using an example. Let's try to find out the deviation for ship's head 145 using card number 2. Now you can see in the deviation card, we have the deviation value given for ship's head 140. The value of deviation is 5 degrees west. And we have the value of deviation for ship's head 150, which is 3.0 degrees west. Let's note down these two values. So you can see for compass course or ship's head by compass 140, the deviation value is 5 degrees west. And for a compass course of 150, the value of deviation is 3 degrees west. Now, if we want to find out the deviation for ship's head 145 or for compass course 145, we need to interpolate. So when we interpolate between 140 and 150, we can easily find out the deviation. The 145 value is exactly midway between these two, 140 and 150. So it is very easy. The interpolation is very easy here. The value of the deviation will also be midway between 3.0 and 5.0. So deviation for 145 comes out to be 4 degrees west. Beta, have a good look at the compass card, the deviation card, and let me know if you have any doubts anywhere. सर फिर इंटरपोलेट तो हम किसी भी वैल्यू के लिए कर सकते हैं ना सर, जैसे 145.9 होता या 146 होता, तो उसके लिए भी इंटरपोलेट करके जस्ट वैल्यू निकाल लेंगे. Yes, beta, that's right. You can interpolate for any value which is required. Okay, sir. और बेटा और कोई डाउट आ रहा है? No, sir. वेरी गुड, क्लियर. बेटा मैंने बोला था ना, मैं हर एक स्लाइड के बाद आपसे डाउट पूछूंगा. सो हैव यू सीन नाउ आफ्टर एवरी स्लाइड आई आस्क यू डाउट्स? Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. और मैंने ये भी बोला था कि मैं सिंपल इंग्लिश यूज करूंगा. सो इंग्लिश इज ओके? Yes, sir. Absolutely fine, sir. वेरी गुड, ग्रेट. ओके, चलो बेटा आगे चलते हैं अब. सो वी हैव सीन द Yes. डेविएशन कार्ड. लेट्स प्रोसीड.
Sir, गो अहेड बेटा। sir, I was asking, जैसे कि एक पर्टिकुलर शिप के लिए सर ये डेविएशन कार्ड्स जो होते हैं ये वेरी करते हैं। जैसे लास्ट टाइम जब हम पनामा कैनाल जब क्रॉस कर रहे थे तो वहाँ एक सर्वेयर आता है कैनाल क्रॉस करने से पहले, तो ही वाज आस्किंग अबाउट कि हाँ डेविएशन कार्ड तुम नया बनाओ, बिकॉज जो ये जो डेविएशन कार्ड है दैट विल नॉट वर्क एंड जो पायलट आएगा वो रिजेक्ट कर देगा शिप को ट्रांजिट करने के लिए, बिकॉज हमारे पास में 2 जायरो कंपास थे शिप पे, तो जो वेरिएशन आता था वो बहुत ज़्यादा, डेविएशन जो आता था बहुत ज़्यादा वेरी करता था, 10 डिग्री 20 डिग्री, तो दैट्स व्हाई आई वाज आस्किंग। ठीक है बेटा, दैट्स ओके। तुम्हारा डाउट क्या है बेटा? सर मेरा डाउट ये है कि अब जैसे कि एक पर्टिकुलर शिप के लिए डेविएशन कार्ड तो सर एक फिक्स रहेगा ना? यस, इट विल बी फिक्स्ड, दैट्स हाँ, राइट। तो अभी जैसे कि पायलट आता है वो बोलता है कि इसको चेंज कर दो, तो हम अपने ओके अकॉर्डिंग उसे चेंज कर सकते हैं इधर से। नो बेटा, नो यू कैन वही सर। बाय चेंजिंग, ही वाज सेइंग कि जो वैल्यू ज्यादा है उसे कम कर दो। हाँ सर, वो यही कह रहा था कि हाँ जितना ज्यादा डेविएशन तुम दिखा रहे हो तो पायलट मना कर देगा ट्रांजिट करने के लिए, तो बेटा वो जो बात आपको कह रहा था वो भी समझदारी की बात है, उसे बोलते हैं जुगाड़। हाँ वो तो पता है सर, वही करके गए थे बट ओके, जैसे वो करके गया। बिकॉज दैट्स राइट। सी बेटा हाँ, देखो, बात ऐसी है कि मैग्नेटिक कंपास की अब उतनी इम्पोर्टेंस नहीं रही जितनी पुराने टाइम में होती थी। इन द यस ओल्डन डेज जब तक हमारे पास जायरो कंपास नहीं थी, मैग्नेटिक कंपास वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस विदाउट इट वी वुड बी लॉस्ट। बट आज की डेट में बेटा मैग्नेटिक कंपास की इम्पोर्टेंस बहुत कम हो गई है। इट इज़ बेसिकली ए बैकअप इक्विपमेंट ओनली। सो अब बात आती है डेविएशन की। डेविएशन एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन लॉट ऑफ फैक्टर्स। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन पे डेविएशन डिपेंड करती है, और डेविएशन चेंज भी होती रहती है। जैसे यस सर। टू गिव यू एन एग्जांपल, हमारा शिप ड्राई डॉक में गया, वहाँ पे कुछ रिपेयर्स हुई, कुछ स्टील स्ट्रक्चर को निकाल दिया गया, नए स्टील स्ट्रक्चर लगा दिए गए। तो जैसे ही आप वहाँ से बाहर आओगे आपकी डेविएशन चेंज हो जाएगी। यस सर। ओके, विद टाइम ऑल्सो द डेविएशन चेंजेस। जैसे एक शिप बना था तो एक डेविएशन कार्ड हमने बनाया, 5 साल के बाद वो डेविएशन चेंज हो जाएगी ऑटोमेटिकली, बिकॉज शिप इज एक्सपोज्ड टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। ओके, यस सो सर। ये चेंज होता रहता है। और अगर किसी शिप में मैग्नेटिक कार्गो को लोड और अनलोड किया जाए फिर तो डेविएशन गोज हे वायर, पूछो मत। कंटेनर शिप्स, हाँ आयरन सर। ओर कैरियर्स, रोल ऑन रोल ऑफ। एनीबडी यस बीन सर। ऑन दिस काइंड ऑफ शिप्स बेटा? यस सर। So you must have seen after every loading and unloading the deviation goes drastically out of range. Huh? यस सर, इवन जो लाइफ बोट के कंपास थे वो भी मैच नहीं कर पा रहे थे। Right. So it's a something which is very dynamic. So हमें क्या करना होता है बेटा? एक कंपास एडजस्टर है जो शिप पे आता है। When the ship is built, he comes on board. After every dry dock, he comes on board. और अगर कभी डेविएशन बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर कंपनी कंपास एडजस्टर को बुलाती है शिप पे, एंड ही पुट्स सम करेक्टर्स ऑन द कंपास। बहुत सारे करेक्टर्स होते हैं कंपास पे। ये आप अपने ब्रिज इक्विपमेंट सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत पढ़ोगे। सो फिर उसके बाद जब आप चीफ मेट्स करने जाओगे तो और ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे। आई टेक दिस मैग्नेटिक कंपास सब्जेक्ट इन चीफ मेट्स। सो अभी के लिए आप सिर्फ इतना याद रखो कि बहुत सारे करेक्टर्स कंपास पे लगे होते हैं। स्फीयर होते हैं दो कंपास के दोनों साइड में, एक फ्लिंडर बार होती है कंपास के आगे लगी हुई, फोर एंड आफ्ट मैग्नेट्स होते हैं, ऑर्थवर्डशिप मैग्नेट होते हैं, एक बकेट होती है हीलिंग एरर हाँ बकेट। सर, देखा है सर, खोल के देखा, चेंज भी करा है सर। वेरी गुड। हाँ सर। सो अब ये जो सारे करेक्टर्स हैं बेटा, इनको हम एडजस्ट करते हैं ताकि हमारी डेविएशन कम से कम हो। सो अगर कभी डेविएशन बढ़ जाए तो इनको करेक्शन में हमें फिर से मॉडिफाई करना पड़ता है, किसी मैग्नेट को निकालना पड़ता है, एक्स्ट्रा मैग्नेट डालना पड़ता है। तो अगर आपकी डेविएशन ज़्यादा है, बेसिकली इट इज़ सेइंग टू यू दैट कंपास नीड्स ए करेक्शन। सो कंपास एडजस्टर को बुलाना है और इसे करेक्ट करवाना है। यू कैन रिपोर्ट इट टू द कंपनी
कि मेरी जो डेविएशन है वो ज़्यादा हो गई है. They say that if it is more than 5 degrees or so, you can ask for a compass adjuster and get it corrected again. जब compass adjuster अपनी correction कर देगा तो आपकी deviation control में आ जाएगी. Okay, so that's the procedure. अच्छा सर, एक बात पूछनी थी, जो जैसे जहाज पे जो डेविएशन वाला जो कॉलम होता है, जैसे आपने बोला अभी कि हम पेपर में अलग अलग डेविएशन कार्ड यूज करते हैं, 1 2 3 4, जो भी हमको बोल दिया जाएगा क्वेश्चन में, उसी से हम वैल्यू पिकअप कर लेंगे. लेकिन जहाज में Correct. तो एक ही होता है, फिर वो कॉलम अलग अलग कार्ड तो होते नहीं. जहाज पे तो एक ही होता है बेटा, जहाज पे तो एक ही होगा, बट जैसे हेडिंग भी जाती है और उसके सामने उसका बस वैल्यू भी जाती है. जैसे लाइक सारी हेडिंग दे दी, जैसे आपने अभी हेडिंग जो दिखाई थी सेम हेडिंग दे दी, और उसके सामने बस डेविएशन की वैल्यू दी. राइट बेटा, राइट. शिप पे सिर्फ एक ही कार्ड होता है. तो यहाँ पे क्यों अलग अलग है सर? ओके बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करने के लिए ना सवालों को, कभी कार्ड नंबर 2 दे दिया आपको, अब आपने प्रैक्टिस करने हैं सवाल फिर से, तो बोल दिया अच्छा आप कार्ड नंबर 1 से कर लो, तो थोड़ा चेंज हो जाएगा ना. एक ही क्वेश्चन को तो बार बार प्रैक्टिस नहीं कर सकते, सिर्फ इसके लिए 4 दिए हैं और कोई पर्पस नहीं हमारी मुसीबतें बढ़ाने के लिए है. सर. ओके ओके, चलें बेटा आगे. यस सर, प्लीज सर. ओके ग्रेट. Now, once you have the variation and deviation available to you, you can quickly find out the compass error. The resultant of variation and deviation is called the compass error. If both of them are of the same name, they are added up. If both of them are of different names, we subtract the smaller one from the bigger one and keep the name of the bigger one. So this is how we obtain the compass error. Now let's quickly refresh the procedure for converting compass to true and true to compass. Now, if you have a compass course given to you and you want to find out the true course, or you have a compass bearing and you want to obtain a true bearing, the method what we use is we start off with the compass course. We first apply the deviation, which is obtained from the deviation card. Now, what do I mean by apply? Deviation could either be added or subtracted. How to find out whether deviation is to be added or subtracted? Remember this idiom: deviation west, compass best; deviation east, compass least. So if deviation is westerly, compass has to be best. Best means bigger. Now if the compass course is bigger, the magnetic course will be smaller. So obviously deviation has to be subtracted. If the deviation is east, the compass is least. Least means compass course is smaller. Now if the compass course is smaller, that means the deviation has to be added to obtain the magnetic course. Once we apply the deviation, we obtain the magnetic course or magnetic heading. Now the second correction which we apply is the variation. So again, whether to add or subtract the variation, you remember the idiom: variation west, magnetic best; variation east, magnetic least. So variation is added or subtracted using this, and then you obtain the true course or the true bearing of an object. सर कैन यू, सॉरी सर, बोलो बेटा बोलो. मैग्नेटिक के लिए आपने क्या बोला था सर?
जब डेविएशन आ जाएगा तो उसके बाद मैग्नेटिक के लिए आपने कुछ बोला था सर, वो सुन नहीं पाया। नहीं बेटा, सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है। आपने डेविएशन निकाल ली। डेविएशन वेस्ट कंपस बेस्ट, डेविएशन ईस्ट कंपस लीस्ट, ये हमने याद रखना है। और डेविएशन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमें मैग्नेटिक कोर्स मिल जाएगा। बट सर ऐड कब करना है, मैग्नेटिक को सब्ट्रैक्ट कब करना है, वो बता दीजिए इसके ऊपर। ये अब देखो बेटा, डेविएशन वेस्ट में क्या लिखा हुआ है आगे? कंपस बेस्ट सर। वेरी गुड। अब अगर कंपस बेस्ट है, मतलब कंपस बड़ा है, तो मैग्नेटिक छोटा होगा। हाँ सर। अगर मैग्नेटिक को छोटा बनाना है कंपस से, तो डेविएशन माइनस करेंगे या प्लस? सर माइनस करेंगे, छोटा बनाना है तो। वेरी गुड, माइनस करेंगे। अब अगर डेविएशन ईस्ट है, तो हमने कंपस क्या लिखा है? लीस्ट सर। कंपस लीस्ट है। अब कंपस अगर लीस्ट रखना है और मैग्नेटिक को बड़ा करना है, तो डेविएशन को प्लस करना पड़ेगा या माइनस? प्लस सर। वेरी गुड बेटा, यू लर्नड। ओके। ओके सर। और बेटा, और बताओ बेटा, और कोई डाउट इसमें? सर लास्ट स्लाइड में जो आपने कंपास एरर बताया था ना, हम्म। तो जैसे कि इफ बोथ आर सेम नेम, राइट। देन सर अगर उसमें कंपास एरर मतलब जैसे मेरा कहने का मतलब ये था सर कि वेरिएशन डेविएशन है ना सर, हम्म। जैसे कंपास एरर दे रखा हो और वो निकालने हो तो उसके लिए कुछ अलग है क्या? नहीं बेटा, बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है। अभी करके दिखाते हैं तुम्हें। इफ यू हैव डाउट वी कैन सॉल्व इट, ओके सर, थैंक यू सर। है ना? ओके सर। एक जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके सर। ओके, सो बेटा आप ये बोल रहे हो कि हमें कंपास एरर पता है, कंपास एरर हमें पता यस है, सर। और डेविएशन और वेरिएशन में से क्या पता है बेटा? सर कोई भी एक वैल्यू सर। ओके, सो डेविएशन और वेरिएशन में से हमें कोई भी एक वैल्यू जो है ये पता है। तो तुम मुझे कोई भी एक कंपास एरर बता दो, कंपास एरर ऑफ योर चॉइस। सर 004 डिग्री सर। ओके, 4 डिग्री इज द कंपास एरर। ईस्ट या वेस्ट बेटा? सर ईस्ट सर। ओके, सो हमें कंपास एरर अपनी पता है कि ये 4 डिग्री ईस्ट है। अब डेविएशन वेरिएशन में से जो भी तुम्हें पता है वो भी मुझे कोई भी एक फिगर बता दो, वट एवर कम्स टू योर माइंड। सर डेविएशन 3 डिग्री वेस्ट। ओके, डेविएशन जो है ये 3 डिग्री वेस्ट है, ये हमें पता है। वेरिएशन हमें निकालनी है। ओके, अब देखो बहुत आसान है बेटा। वेरिएशन की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि जब हम डेविएशन और वेरिएशन को कंबाइन करें, ओके, व्हेन वी कंबाइन देम, कंबाइन का मतलब है सेम नेम ऐड होंगे, ऑपोजिट नेम में जो छोटा वाला है वो बड़े वाले से सब्ट्रैक्ट होगा। ओके, कंबाइन करना है इनको। सो अब हमें ऐसी वैल्यू वेरिएशन की निकालनी है कि उसको डेविएशन से कंबाइन करने पे आंसर आना चाहिए 4 डिग्री ईस्ट। सो ऑब्वियसली इट बिकम्स वेरी सिंपल। अगर मैं अपनी वेरिएशन की वैल्यू को 7 डिग्री ईस्ट लेता हूँ, यू सी, 7 डिग्री ईस्ट मेरी वेरिएशन की वैल्यू है, 3 डिग्री वेस्ट डेविएशन है,
तो ऑपोजिट नेम है तो छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। 7 - 3 आंसर आ जाएगा 4 डिग्री ईस्ट। ओके सर, गॉट इट सर। राइट बेटा? यस। वेरी गुड। और बेटा और कोई डाउट? लेट्स गो बैक टू द प्रेजेंटेशन। नो सर, थैंक यू सर। ओके, वेरी गुड। सो हमने कन्वर्जन देख लिया बेटा, कंपास टू ट्रू। सो एनी डाउट इन दिस? इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। कहीं पे भी कोई डाउट आ रहा है तो पूछो बेटा। ग्रेट, वेरी गुड। अब इसे याद रखने का बड़ा आसान तरीका है। बहुत सारे तरीके हैं बट एक तरीका आपको बता देता हूँ। कैडबरीज डेयरी मिल्क वेरी टेस्टी। सो CDMVT, इसे आप अगर याद रखोगे then you will remember the sequence in which deviation and variation are applied. Okay, Cadbury's dairy milk very tasty. So just remember it. हो सकता है कोई और भी तरीके से आपको ये याद हो। अगर वैसे याद है तो आप वैसे भी याद रख सकते हो। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने इसे भूलना नहीं है। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर हमने इसमें गलती कर दी तो हमारे जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएंगे। सो आगे चलें बेटा। यस सर। ओके, now let's see the conversion from true to compass. We have just now seen how to convert compass course or compass heading to true courses or true heading. Now we will see how to convert from true to compass. We follow the same procedure but in reverse. We start off with the true course or true bearing, then go backwards. So to the true course or true bearing, we first apply the variation using the same idiom: variation west, magnetic best; variation east, magnetic least. So variation is applied to the true course. That means either added or subtracted, and we obtain the magnetic course. Now to the magnetic course, we apply the deviation using the same idiom: deviation west, compass best; deviation east, compass least. Now once we apply the deviation, we get the compass course or compass heading. So this is also clear beta. Any doubts? नो सर, जस्ट रिवर्स जाना ना इसमें बस। बस बेटा रिवर्स जाना है सर। और ये तो थ्योरेटिकली तो है सर, बाकी जब प्रैक्टिकली करेंगे तो और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। राइट बेटा, राइट। सो अब इसमें एक दिक्कत आएगी बेटा। जब आप ट्रू टू कंपास कन्वर्जन करोगे, वन प्रॉब्लम विच यू आर गोइंग टू फेस, लेट मी टेल यू। यस सर। Now there is one issue which we are going to face here, and that issue is how to get the deviation. What is the problem in obtaining deviation here? The problem is deviation is given to us in the deviation card, and the deviation in this deviation card is mentioned against the compass course. Now, when we are going from true to compass, this compass course is not known to us. We don't know what is the compass course. So what we know is the magnetic course. So did you understand the problem, beta? यस सर, बिकॉज मैग्नेटिक कोर्स के बाद तो फिर हमको पता ही नहीं है आगे से। राइट। सो प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास अभी मैग्नेटिक कोर्स है, कंपास कोर्स तो नहीं है।
पर डेविएशन निकालने के लिए तो हमें कंपास कोर्स चाहिए. सो लेट अस सी कि हम इसे कैसे निकालेंगे. Yes, sir. Now in the deviation curve or deviation card, the deviation is not given against magnetic course. So how to obtain the deviation when we do not have the compass course? So let's see it. Let's understand it using an example. Let's say we want to find out the deviation for a magnetic course of 153. Let me open up the deviation card for you. You can see the deviation card here. I have only kept deviation card number 2. So this is what we will be using for this example. Jitendra, beta, you can mute your mic. Now, first of all, you see in this deviation card, the deviation is given against ship's head by compass. And you see, we do not have the compass heading. What we have is the magnetic heading. So nevertheless, what we will do here is, we will enter into this deviation card using compass courses close to our magnetic course. So the magnetic course, what we require is 153. Let us pick up the deviation values for compass courses close to this. So close to this we have 150, and the other course which we have is 160. So let's pick up the deviation for 150 and 160 compass courses. So you can see it here, the compass course and deviation. For compass course of 150, the deviation is given as 3.0 degrees west. So compass course 150, deviation is given as 3.0 degrees west. For 160, 1 degree west. for 160, the deviation is 1.0 degrees west. So we noted down the deviation for 150 as well as 160. Now for compass course 150, I have the deviation 3 degrees west. If I have the compass course as well as the deviation, I can calculate the magnetic course also. So using these two, the magnetic course comes to be 147. You see error west, compass best. So if the compass has to be best or greater, the magnetic course has to be smaller. It should be 147. Similarly, for a compass course of 160, deviation is 1 degree west. Deviation west, compass west. So the magnetic course in this case would be 159. So you see, we were able to calculate or get the values of magnetic courses from the data given in the deviation card. Now what we will do is, we can now interpolate for deviation between the magnetic courses. You see, the magnetic courses are 147 and 159. And we have the value of deviation for both of them. So exactly as we were interpolating the deviation for intermediate courses using ship's head by compass, similarly, we will now find out the deviation by interpolation between magnetic courses of 147 and 159. Now the deviation what we require is for magnetic course 153. So 147 and 149, the value which we require 153 exactly falls midway between these two. So the deviation for this would be exactly midway between 1 and 3, that is 2.0 degrees west.
So you can interpolate and the value of deviation comes out to be 2 degrees west. So this is how we can obtain the deviation if we have the magnetic course available to us and compass course is not there. So have a good look at it, beta, and let me know if any doubts come to your mind. सर जब अपन ने मैग्नेटिक फोर्स निकाल लिया सर डेविएशन यूज करके, तो फिर उसके बाद सर इसका जो सम करके डिवाइड बाय 2 आ रहा है, 153 आ रहा है। ओके, मैग्नेटिक फोर्स का सर, तो यहाँ पे ये दोनों जो वेस्ट वेस्ट हैं, जो दोनों जुड़ जाएंगे सर, डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। हाँ बेटा, सिंपल इंटरपोलेशन है। लेकिन अगर यहाँ पे सर वो ईस्ट होता है एक, ओके ओके ओके। सर एक बार इसको फिर से एक्सप्लेन कर देना, थोड़ा नेटवर्क चला गया था। ओके बेटा, कहाँ से नेटवर्क चला गया तुम्हारा? डिड यू लिसन टू एनी स्टेप्स? यस सर, ये हो गया था नीचे जो अपने मैग्नेटिक कोर्स निकाल रहे थे ना 159 यहाँ से सर। ओके, देखो बेटा, मैग्नेटिक कोर्सेज जब हमारे पास आ गए, नाउ इट बिकम्स वेरी सिंपल। वी हैव मैग्नेटिक कोर्स 147, डेविएशन फॉर इट इज 3 डिग्री वेस्ट। वी हैव मैग्नेटिक कोर्स 159, डेविएशन इज 1 डिग्री वेस्ट। हमें जो डेविएशन चाहिए वो मैग्नेटिक कोर्स 153 के लिए चाहिए। So we just interpolate between these two and get the deviation. Okay? ओके सर। Okay. अब बेटा एक और डाउट आ रहा है कि अगर इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू ईस्ट में आ जाती है तो क्या करेंगे? So let me show you on a whiteboard. Okay, so let us take an example. Let us say हमारी यही वैल्यूज़ हैं एंड इनमें से कोई भी एक वैल्यू ईस्ट में लेना चाहते हो बेटा? बताओ कौन सी वैल्यू लेना चाहते हो? हाँ, कोई भी सर ले लीजिए, 1 ले लीजिए, 3 ले लीजिए। सो हमारे मैग्नेटिक कोर्स हैं 147 एंड 159। हमें जो अपनी वैल्यू निकालनी है वो चाहिए 153 के लिए। यस सर। दिस इज व्हाट वी वांट टू फाइंड आउट। सो डेविएशन जो है, लेट्स टेक द डेविएशन एज पर योर चॉइस। व्हाट डेविएशन यू वांट टू टेक फॉर 147 बेटा? सर 3 डिग्री ईस्ट। ओके, सो ये हमने वैल्यू ले ली 3 डिग्री ईस्ट। एंड फॉर 159? 1 डिग्री वेस्ट। 1 डिग्री वेस्ट। सो अब हम इंटरपोलेशन कैसे करेंगे 153 के लिए? देखो बेटा, जब हम ये इंटरपोलेशन करते हैं, फर्स्ट लेट अस सी कि 159 और 147 इनके बीच में कितना डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? सर 12। वेरी गुड। सो 12 डिग्री हेडिंग में जो डिफरेंस होता है, तो हमारी डेविएशन में कितना चेंज आता है? What is the change in our deviation? 1 डिग्री वेस्ट से 3 डिग्री ईस्ट तक टोटल चेंज कितना आया बेटा? 4 डिग्री सर। वेरी गुड, डेविएशन में चेंज आया 4 डिग्रीज। 4 डिग्री का चेंज आया डेविएशन में। राइट बेटा? ओके, अप टू हियर? यस सर। वेरी गुड। अब बेटा 12 डिग्री चेंज के लिए हमारी डेविएशन में चेंज आया 4 डिग्री। अगर हमारी हेडिंग में 1 डिग्री की चेंज होती तो डेविएशन में कितना चेंज आता? डेविएशन में चेंज आता 4/12। करेक्ट बेटा? यस सर। अब
हमें जो डिफरेंस चाहिए, हमारे कोर्स है 153, आप किसी भी वैल्यू से डिफरेंस ले सकते हो। इसका किससे लेना चाहते हो, 147 से या 159 से? सर 1447 से। ओके, सो हमने देखा कि 147 में और हमारी वाली जो वैल्यू है, इसमें कितने डिग्री का डिफरेंस है? 6 का सर। 6 डिग्री का डिफरेंस है। तो हमें 6 डिग्री डिफरेंस यहाँ पे चाहिए। तो 6 डिग्री डिफरेंस के लिए अब क्या करेंगे, ये जो 4/12 की वैल्यू आई थी, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा बाय 6। जब आप इसका आंसर निकालोगे तो ये आएगा 2 डिग्रीज। ओके सर, लेकिन डायरेक्शन डायरेक्शन हाँ, डायरेक्शन ये जो 2 डिग्री है बेटा, दिस इज द डिफरेंस इन डेविएशन। सो 147 की डेविएशन थी 3 डिग्री ईस्ट, 2 डिग्री का डिफरेंस आएगा। सो 3 डिग्री ईस्ट से जब 2 डिग्री का डिफरेंस आएगा तो वैल्यू कितनी बच जाएगी? 3 डिग्री ईस्ट माइनस 2 डिग्री, द वैल्यू ऑफ डेविएशन विल बी 1 डिग्री ईस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स। सब 153 की जगह 152 होता तो 147 या 159 कहीं से भी ले सकते थे क्या? कहीं से भी ले सकते हैं बेटा, बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जहाँ से आपने हेडिंग का डिफरेंस लिया है, डेविएशन का डिफरेंस भी उसी वैल्यू से आएगा, इसका ध्यान रखना है। ओके बेटा, अंडरस्टूड? सर एक क्वेश्चन था। बेटा पहले इसमें समझ आ गया ये? ये सर यस सर। सर इसमें ना लास्ट बोल रही है सर, ये जैसे 2 डिग्री आया सर, तो हाँ, उसकी डायरेक्शन क्या होगी सर, ईस्ट या वेस्ट? ठीक, अभी बताता हूँ मैं बेटा। 2 डिग्री डिफरेंस आ गया ना, हाँ डिफरेंस 2 डिग्री आ गया सर 6 पे। मतलब हमें अब 3 डिग्री ईस्ट से 2 डिग्री आगे जाना है। अब वो 2 डिग्री इसमें ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, क्या करें, ये आपको दूसरी वाली वैल्यू बताएगी। जब आप 3 डिग्री ईस्ट से 1 डिग्री वेस्ट की तरफ चलोगे तो ये डेविएशन कम होगी या ज़्यादा होगी? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा सर, कम होगी सर। वेरी गुड, क्योंकि जो भी वैल्यू आपकी आनी है वो इन दोनों के बीच में ही आनी है ना बेटा। यस सर। तो आपने ये देखना है कि इन दोनों के बीच में ऐड करके वैल्यू आ रही है या सब्ट्रैक्ट करके, आपने वही कर देना है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, डायरेक्शन जो ग्रेटर होगा उससे आएगी सर। बेटा फिर से पूछो। जो डायरेक्शन है सर, ईस्ट या वेस्ट? बेटा जब आप 3 डिग्री ईस्ट में 2 डिग्री सब्ट्रैक्ट करोगे तो ईस्ट में दे ये 1 डिग्री ईस्ट ही रहेगा। यस सर। ओके सर। ओके ओके सर। ओके, अब बेटा नेक्स्ट डाउट बताओ मुझे। और भी किसी का डाउट था बेटा? क्लियर हो गया? यस सर। ओके बेटा, ऑल राइट। ओके, सो हमने बेटा अब डेविएशन निकालना सीख लिया है। कार्ड से डेविएशन को कैसे निकालना है ये हमें पता चल गया है। और अब हमने ये भी सीख लिया है कि अगर हमें ट्रू टू कंपस या कंपस टू ट्रू कन्वर्जन करना हो तो हम कैसे करेंगे। CDMVT टेक्निक हमें पता चल गई है, कैडबरीज डेयरी मिल्क वेरी टेस्टी। सो इसको यूज़ करके हम कंपस टू ट्रू और ट्रू टू कंपस अपने कोर्सेज को, अपनी हेडिंग्स को चेंज कर सकते हैं, बियरिंग्स को चेंज कर सकते हैं। ये प्रोसीजर जो है ये चार्टवर्क में बहुत जगह पे यूज़ होता है, बिकॉज चार्टवर्क में जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें बहुत बार हमें कंपस बियरिंग दी जाती है या कंपस कोर्सेज दिए जाते हैं। जब हम इनको चार्ट पे प्लॉट करते हैं तो हमें ट्रू बियरिंग या ट्रू कोर्सेज में प्लॉट करना होता है। सो जब भी हम कंपस टू ट्रू कन्वर्ट करते हैं तो इसी मेथड को यूज़ करते हैं, CDMVT, कैडबरीज डेयरी मिल्क वेरी टेस्टी।
ओके, कंपास, डेविएशन, मैग्नेटिक वेरिएशन, ट्रू। ओके बेटा, सो यहाँ तक सबको समझ में आ गया बेटा? हाँ जी सर। यस सर। अब बेटा आगे जो टॉपिक आने वाला है वो इससे थोड़ा सेपरेट है। दैट इज़ द टॉपिक ऑफ पोजीशन लाइंस। हम उस टॉपिक में ये देखने वाले हैं कि कौन कौन से डिफरेंट मेथड्स हैं जिनके साथ हमें पोजीशन लाइंस मिलती हैं, एंड कैसे हम उन पोजीशन लाइंस को चार्ट पे प्लॉट करते हैं। तो हमारे पास अब अबाउट 6-7 मिनट का टाइम है। सो डू यू वांट टू कंटिन्यू विद दैट टॉपिक और यू वांट टू कीप इट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर? सर फॉर नेक्स्ट लेक्चर सर, अभी इसी का प्रैक्टिस कर लेते हैं सर थोड़ा। ओके बेटा, ऑल राइट। सो ये जो चीज़ मैंने आपको कराई है, ये आप वीडियो डाउनलोड कर पाते हो बेटा? जो टीम्स में लेक्चर के वीडियोस होते हैं हमारे। यस सर। यस सर, हो जाती है। वेरी एवरीडे सर। वेरी गुड, ग्रेट। सो इसे आपने पक्का कर लेना है बेटा, ये जो हमने आज सीखा है, डेविएशन, वेरिएशन, हाउ टू अप्लाई ट्रू टू कंपास, कंपास टू ट्रू, इसे आपने पक्का कर लेना है। एंड अगले लेक्चर में जब हम मिलेंगे, मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा। उस वीडियो में हम सारी की सारी पोजीशन लाइंस के बारे में सीखेंगे। सो दैट इज़ द प्लान फॉर द नेक्स्ट क्लास। ओके सर। ओके, ऑल राइट। बेटा